व्हाट इज दिस पॉपुलेशन सेटलमेंट किया था आपने? तो पूरा किया था? कितना किया था? आप टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, इतना क्लियर कर सकते हैं। हाँ? पूरा नहीं किया था, तो आप टेस्ट अटेंड कर पाओगे? लेके जाना चाहते हो टेस्ट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हेलो 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 यस, हाँ कर पाओगे ना टेस्ट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, एक बार ले जाओ, रिवाइज कर लेना, सारा रिकॉर्डेड लेक्चर देख के ना फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करना. फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स योर दिस टेस्ट हैज बीन अपलोडेड टुडे itself I guess, because maybe because of Diwali celebration tomorrow they have done it in advance. So this is what I think. Is it reflecting on your portal? Anybody, can you just update me so that I can tell them in advance? And for the offline students I have got the printout already. ठीक है, एक बार ये आपने खुद बनाया? वेरी नाइस. ये पहले से बना हुआ था या पता था आपको? पहले का था, बहुत अच्छा है. गुड. यस. कैन यू चेक एंड लेट मी नो? कैन यू चेक ऑन योर पोर्टल and let me know in advance, because this is important. No, ma'am, it's not yet uploaded right now. It is not yet uploaded. Okay, Yes. मैं एक बार बोलती हूँ. ठीक है. Online Piyush in my class. Okay. कहाँ है वो? प्रवेश. Please प्रवेश. Send him inside. हाँ हाँ क्लास में. और ये ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड नहीं हुआ क्या कल का टेस्ट? नहीं, ऑफलाइन कॉपीज आई हैव गॉट. ऑनलाइन कॉपीज क्यों अपडेट नहीं हुई? क्योंकि वे स्टूडेंट विल डिमांड दिस ना, तो स्टूडेंट का टेस्ट है. I'm checking it. Just give me a minute. Hello, Pravesh, have you not uploaded the test for the online students? So please update it just now, because they are asking that if you are providing it to offline, then online students also you provide it today only. Upload it. Upload them. Okay. Done. So meanwhile they'll just upload the test. हम लोग और discuss करते हैं. कल हम लोग क्या कर रहे थे? Can we just have a brief around what we did yesterday? ध्रुव, ईशान, तनिष्का, हाँ दीपाली, बताइए क्या कर रहे थे हम लोग कल? बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्लाइमेटोलॉजी. अगर क्लाइमेटोलॉजी को बहुत रीजंस के साथ समझेंगे तो क्लाइमेटोलॉजी जैसा सब्जेक्ट नहीं है, मतलब टॉपिक नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड थर्मल कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, ऑफ हेले. और क्या किया था हमने इसमें? व्हाट एल्स वी डिड इन हेलेस कॉन्सेप्ट? क्रिटिसिज्म ऑफ हेले, वेरी गुड. व्हाट क्रिटिसिज्म दैट वी हैव डिस्कस? क्या क्या इनके पॉइंट्स है, क्या और क्या क्रिटिसिज्म था? जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन.
Hello? 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 Yeah, I'm in the class right now. Can you just text me? Okay, okay, please. हाँ, yes, tell me. बताइए. हाँ. हम्म. हम्म. Start improving. बोलिए बोलिए. हम्म. हाँ. 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 Okay. Hmm. And hmm. What else? Have you revised ICTZ, ITCZ? What is the concept of ICTZ, ITCZ? बताइए. Ma'am, ITCZ stands for Intertropical Convergence Zone, where Hmm. the subtropical Hmm. trade winds and the Hmm. equatorial low pressure winds they converge with each other. Okay. Okay. ठीक है. So the thing that you are trying to say is that ITCZ, मैंने आपको कल भी बोला था कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा अगर आप ITCZ नहीं करके आएंगे. You will not study the ITCZ, you won't be able to understand this concept. बताया था मैंने कल. So how many of you actually understood the ITCZ? Like Tanishka has explained me. She has also given about Hellish. She has also given a good explanation of ITCZ. लेकिन कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है ITCZ है क्या? और I will not move forward unless I'll not explain to ITCZ. क्यों? Because आपको समझ ही नहीं आएगा. फिर आप बार-बार उसी चीज पर अटके रहेंगे. ठीक है? It's a very very normal push from my side. ठीक है? क्यों कर रही हूँ मैं ये? क्योंकि अगर मैं आपको पुश नहीं करूंगी तो आप एक ही लूप में चलते रहेंगे. एक ही जगह अटक जाएंगे एंड यू विल नॉट डू द थिंग्स. और किसने किया? सौम्या, हैव यू डन द ITCZ? सब फेस्टिव मोड में है, इंक्लूडिंग मी. लिखिए ITCZ के बारे में, लिखिए और समझते हैं हम इसको पहले. बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग फ्रॉम द GS बैकग्राउंड. आई डू अंडरस्टैंड. काफी लोगों जैसे ईशान ने नहीं किया है तो उनको समझने में इश्यू होगा मे बी. सो आई वॉन्ट एवरीबडी शुड बी ऑन द सेम पेज. लिखिए की कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लिखिए. ITCZ क्या है? ITCZ, राइट ऑन द हेडिंग. ITCZ stands for Intertropical Convergence Zone. ITCZ stands for Intertropical Convergence Zone. और क्या है ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन? राइट डाउन. कॉमा अ बेल्ट ऑफ लो प्रेशर अराउंड इक्वेटर. कल हमने देखा था लो प्रेशर बेल्ट है इक्वेटर के पास जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर. राइट. अ बेल्ट ऑफ लो प्रेशर. अंडरलाइन करेंगे लो प्रेशर को. प्लीज अंडरलाइन द वर्ड लो प्रेशर. A belt of low pressure around a belt of low pressure around equator where northeast and
southwest, where northeast and southwest trade winds converge. Trade winds converge. Where northeast and southwest trade winds converge. तो क्या मतलब है? I'll explain you. पहले आप लिख लीजिए, then I'll explain you each and every word. Northeast and southwest trade winds converge. And I'm very glad. A big round of applause for everyone who has showed up today. Like you people have showed up today just before the festive season. Like I was not expecting so many students today. Excellent. This shows your dedication. Showing up is a very good thing. Kudos to all the online students and offline students who have come today. Welcome, Tanishka. So, ITCZ stands for Intertropical Convergence Zone, comma, a belt of low pressure around equator, a belt of low pressure around equator, where northeast and southwest trade winds converge. Full stop. This convergence cause warm, comma, moist air. This convergence cause warm, comma, moist air to rise, comma, leading to frequent thunderstorms, leading to frequent thunderstorms, comma, leading to frequent thunderstorm, comma, heavy rainfall and formation of heavy rainfall and formation of cumulonimbus clouds. Cumulonimbus clouds. Now write down the key characteristics. Key characteristics लिखेंगे ICTZ का. Write down the key characteristics. First point, formation. It forms where trade winds. It forms where trade winds. It forms where trade winds from the northern and southern hemisphere. From the northern and southern hemisphere northern and southern hemisphere meet underline करेंगे, underline this point, meet, comma a phenomena driven by intense solar a phenomena driven by intense solar heating at the equator. The phenomena driven by intense solar heating at the equator. Next point, weather. The upward movement of the air
the upward movement of the air leads to convection. It leads to convection, comma, resulting in frequent thunderstorm, and heavy rainfall, Write down seasonal movement. Write down the heading seasonal movement. This is what I was referring to, that it's not necessary they should be at the 0 degree only. Now explain the position of the ITCZ. The position of the ITCZ migrates north and south. Migrates north and south. It migrates north and south with the seasons. Comma, following the overhead position. Following the overhead position of the sun. Following the overhead position of the sun. Next point. The other names of ITCZs are equatorial convergence zone. Other names of ITCZ are equatorial convergence zone, or equatorial convergence zone, or the doldrums, ये दोनों ही इनके नाम हैं, ठीक है. A name used by sailor to describe the zone. A name used by sailor to describe the zone, often calm and windless conditions. अब एक बात नोटिस करेंगे, क्या है आईटीसी से. पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, प्लीज रीड आउट दीपाली. व्हाट इज माय फर्स्ट पॉइंट? A belt of low pressure. Why a belt of low pressure? The reason is I have given to you, do not learn anything without reason. The reason I have given already to you because of the higher insolation. Okay, higher the insolation, and because of the higher insolation, what will happen? It is having the low pressure. Okay, next बोलिए. Where the northeast and southwest wind converge. अब आप एक बात बताइए, trade winds blow like this. These are the trade winds. कितने लोगों को ट्रेड विंड्स का कॉन्सेप्ट पता है? जो जीएस के नए स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने नहीं करा है अभी तक ज्योग्राफी, जस्ट दे शुड नो वन थिंग, दैट दीज आर द ट्रेड विंड्स. ये आपका नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर है, दिस वन. अभी कैसे और क्यों इस तरह से पोजीशन पे होता है उसका भी एक रीजन है, बट यू विल नॉट डिस्कस इट राइट हियर. एंड दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. ठीक है, जो आपका ऊपर वाला ट्रेड विंड्स है, दिस वन, ये आपको कौन सा बेल्ट है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. दिस इज योर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर. दिस इज ऑल्सो योर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर. पर ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर किस में है?
इट इज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर और ये कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, इसका डायरेक्शन कैसा है, इस साइड। क्यों इस साइड है, देखिए ये है आपका हाई प्रेशर और आपको पता है हमेशा विंड ब्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो कैन आई से दैट हाई प्रेशर द विंड विल ब्लो टुवर्ड्स लो प्रेशर लाइक दिस, राइट? बट यू विल आस्क मी मैम व्हाई द डायरेक्शन इज लाइक दिस, डायरेक्शन तो ये भी हो सकती थी, यही डायरेक्शन क्यों ली है आपने? डायरेक्शन हियर इज बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्ट्स टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि यहाँ राइट की तरफ कोरियोलिस फोर्स लगेगा, हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ कोरियोलिस फोर्स लगता है, तो इट विल मूव लाइक दिस। और साउथ में इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इस तरह लगेगा। नॉर्थ में कैसा लगेगा, राइट साइड। जैसे अगर ये विंड आ रही है, अगर ऐसे जा रही है नॉर्थ की तरफ, तो राइट साइड मुड़ जाएगी। जैसे यहाँ से विंड चली तो आप कैसा रखोगे अपना हाथ नीचे, आइडियली कैसे आनी चाहिए थी विंड, लाइक दिस, ऐसे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लेकिन नॉर्थ में किसकी तरफ मुड़ जाएगी, राइट साइड। क्यों, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स लगता है राइट में, ये यूनिवर्सल रूल है किसी भी जब कभी भी आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, दिस इज अ यूनिवर्सल रूल इन दिस, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा रहेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में इस साइड ऐसे होना चाहिए था डायरेक्शन विंड का, पर ऐसे ना होके इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है दोनों का, ये कन्वर्जेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, सदर्न और नॉर्दर्न का, ये जो ट्रेड विंड्स है यहाँ पे कन्वर्ज मतलब क्या होता है, मिलना, कन्वर्जेंस हो रहा है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ वेदर कैसा है, वेदर अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे ये आपके व्हाट इज दिस इज हियर, ये आपके ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एयर होगी, जो इस एरिया में जो एयर होगी, विच विल बी मोर ऑफ, इट विल गो वर्टिकली अपवर्ड्स। देखिए इस एरिया में जो विंड है इट विल गो लाइक दिस वर्टिकली अपवर्ड्स, यहाँ पे ये वाला मूवमेंट कम होता है विच इज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतलब ये देखिए इस वाले एरिया में, प्लीज ध्यान से समझना, इस वाले एरिया में देयर इज नो मूवमेंट लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होता है, यू ऑलवेज हैव अ वर्टिकल मूवमेंट, और वर्टिकल मूवमेंट की वजह से ही यहाँ पे बारिश होती है, इक्वेटर के ऊपर वर्टिकल मूवमेंट की वजह से बारिश होती है, नॉट बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। वर्टिकल मूवमेंट का क्या मतलब है, जैसे एयर है या वाटर है, वाटर विल बिकम इवेपोरेट बिकॉज ऑफ द सोलर हीटिंग, और वाटर क्या करेगा, वेपर विल मूव टुवर्ड्स अपवर्ड, which you call it as vertical movement, and because of that what will happen, precipitation will happen। इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो इसमें कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा, नॉट द आपका हॉरिजॉन्टल की वजह से नहीं होगा, जो कि साउथ वेस्ट मानसून वगैरह की वजह से जो आता है वो क्या है आपका, वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, दैट इज नॉट वर्टिकल। मतलब एक विंड यहाँ से यहाँ तक जा रही है, सो दैट इज यू कॉल इट एज, वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर। बट आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, it is an area of simply a low pressure, yes winds are coming here from high pressure to low pressure, but जैसे ये winds यहाँ पर आएंगी, ठीक है, these winds are coming at low pressure, what will happen, already they will get warmed up here, तो कैसा होगा, it will blow upwards। आप इसको एटमॉस्फेयर की तरह देखिए, it will blow upwards, वाटर बहुत इंटेंस है, बहुत सोलर रेडिएशन बहुत हाई है, एंड इट विल टेक अपवर्ड्स, ठीक है। अब next point is seasonal movement, the position of ITCZ migrates north and south with the season following the overhead position। अब ये देखिए जरूरी नहीं है ये जो 0 डिग्री पे मैंने लो प्रेशर बनाया है, ये सेम चीज मैं थोड़ा सा ऊपर भी उठा के लेके जा सकती हूँ, राइट, सेम थिंग। और ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इट गोज अपवर्ड्स, व्हाई, बिकॉज ऑफ द सोलर हीटिंग इज मोर टू इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो हो सकता है ये जो यहाँ पे आपका सब ट्रॉपिकल यहाँ पे एंड हो रहा है, ये यहाँ पे ना एंड हो कि यहाँ पर एंड हो, क्यों, बिकॉज इट हैज मूव्ड अप। उसके रिलेटिव में तो आप काम करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि नाउ योर इक्वेटर का जो whatever phenomena of ITCZ we are experiencing, we are not experiencing at 0 degree, we are experiencing at 5 degree north। पहले मैंने यहाँ पे बनाया था 0 डिग्री पे, अब यहाँ पे तो वो चीजें नहीं है, एरिया जो है डॉलरम का वो यहाँ एक्सपीरियंस हो रहा है, योर इक्वेटोरियल लो प्रेशर वो यहाँ एक्सपीरियंस हो रहा है,
विच इज 5 डिग्री नॉर्थ, तो यहाँ पे आपका बनेगा, नॉट हेयर। तो इसको मैं कंसीडर क्या करूंगी, इक्वेटर। ये मेरा न्यू इक्वेटर है एक तरीके से, ये आप सोचिए। अब ये न्यू इक्वेटर है तो क्या होगा, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ चला गया सब कुछ, तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ, जो भी मतलब ट्रेड विंड्स आपकी थोड़ी ऊपर की साइड होगी ना, शिफ्ट हो गया, नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गया, तो ये थोड़ा ऊपर, दिस इज व्हाट यू कॉल एट सीजनल मूवमेंट। अब जैसे अब विंटर्स आर अप्रोचिंग, तो ये कहाँ जाना चाहिए, सन इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ, सदर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है सन, तो कैसा होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है सन, तो इट विल शिफ्ट साउथवर्ड्स। तो बेसिकली क्या आ जाना चाहिए, इक्वेटर, योर दिस एरिया कैन शिफ्ट हियर साउथ, तो क्या हो जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा, इसको कहते हैं शिफ्टिंग। तो यही आपका आईसीसी है, जिसका नेम डिफरेंट डिफरेंट आप नेम से बुलाते हो, कभी आप इसको डोल्ड्रम्स बोलते हो, कभी यू कॉल इट एज इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सो यू हैव डिफरेंट नेम्स। डोल्ड्रम्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हवा, इट्स अ काम, हवा क्यों नहीं चलती है यहाँ पे, बिकॉज एरिया नहीं है हाई प्रेशर लो प्रेशर का, इधर लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर नहीं है, इधर यहाँ पे तो कोई एरिया डिसेंड ही नहीं कर रही है। आप समझ पा रहे हैं ये बात, क्या मैं बताना चाह रही हूँ, ये फिनोमेना समझिए आप, ये इक्वेटर है आपका, जैसे ही वाटर है, यहाँ पे वाटर बॉडीज है, एक तरीके से ये समझिए, या कैसे भी वाटर का फॉर्मेशन है, यहाँ पर सोलर रेडिएशन आया, अब ये जो वाटर है इवेपोरेट करेगा एंड इट विल राइज अप, यहाँ पे भी इवेपोरेट करेगा, इट विल राइज अप, ठीक है, समझ में आ रहा है, अभी नीचे क्यों बनाया ऊपर क्यों बनाया समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, इसको ऐसे लो, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो और वाटर है एंड देन इंटेंस सोलर रेडिएशन है, तो कैसे मूव करेगा, कहीं पे भी ऊपर की साइड, ऊपर की साइड, यहाँ पे भी ऊपर की साइड, नीचे बनाने का मतलब ये नहीं है कि नीचे इट इज फॉलिंग, इट इज लाइक ऊपर एटमॉस्फेयर में ऊपर की साइड जा रहा है यहाँ पे, पर नॉर्थ की तरफ ना जाके साउथ की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो ये बात, कैसे, जैसे इक्वेटर पे खड़े हो अभी आप, ठीक है, अभी दिस इज योर इक्वेटर, आप ये समझ लीजिए, आई एम स्टैंडिंग, कोई भी इक्वेटर कंट्री बताओ इक्वेटर से पास होती है, अफ्रीका की कोई भी कंट्री, इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, अब वाटर क्या है ऊपर की तरफ, इट विल फ्लो लाइक दैट, राइट, एंड इट गोइंग टुवर्ड्स अप, ऊपर की तरफ, ठीक है, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है तो कहीं तो डिसेंड होगा, कहाँ डिसेंड होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे, अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे इट विल डिसेंड, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर, तो ऐसे आपका विंड सब ब्लोइंग, ये आपकी हॉरिजॉन्टल विंड्स बन सकती है, ये आपकी विंड्स है, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये नहीं हमेशा ऐसे ही चलेगा, इट विल बेंड आल्सो बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, ये आपकी हॉरिजॉन्टल विंड्स है, लेकिन द पॉइंट इज कि यहाँ पे आपका कामनेस रहता है, बिकॉज इस पे तो कोई भी आपका हाई प्रेशर, ऐसा तो नहीं यहाँ पे हाई प्रेशर है लो प्रेशर है तो ही तो आपका दिस विल फ्लो, योर winds will blow, पर यहाँ पे कन्वेक्शनल जो रेनफॉल है, जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर है, उसकी वजह से देयर इज रेनफॉल एक्सेट्रा, बट नॉट बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर इन द सेम रीजन, यहाँ पे सिर्फ लो प्रेशर है। आ रही है बात समझ में, कितने लोगों को एक्चुअली में बात समझ में आई है, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक, क्लाइमेटोलॉजी इज अ क्वाइट टेक्निकल टॉपिक, प्लीज टेल मी एंड हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली अंडरस्टूड। ध्रुव इज सेइंग क्लियर, ईशान आप बताइए, तनिष्का, सौम्या, तनिष्का सिंह, सौम्य, ध्रुव, गुड, एवरीवन इज क्लियर, ठीक है, गुड, आई थॉट आप लोगों को पता नहीं एक बार में समझ में आएगा या नहीं, गुड, ऑल राइट, सो वी हैव डन, आई और कोई क्वेश्चन दिया था मैंने आपको कल, एनी अदर क्वेश्चन, कोई डाउट है आपको, लोगों को समझ आया था आईटीसी से खुद से, बी ऑनेस्ट, खुद से समझ आया था आप लोगों को,
जब आपने असाइनमेंट किया था किसी ने भी? नहीं, पहले समझ में आया था, जस्ट वांटेड टू नो दैट आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, क्योंकि मैंने असाइनमेंट दिया ही इसलिए था ताकि आप खुद देखो कि आपको समझ में आ रहा है, खुद से आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मुझे थोड़ा उसकी क्लैरिटी चाहिए. Some doubt was there, Ishan is saying. Okay, Tanishka is also saying the same. Good. ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी की जो आपका राइटिंग स्टाइल है या फिर आपका किसी भी बुक का राइटिंग स्टाइल है, इट इज नॉट दैट मच क्लियर कि आपको ये टेक्निकल टॉपिक समझ में आए. फॉर दैट यू नीड द गाइडेंस. और क्लाइमेटोलॉजी में तो बिल्कुल स्कोप नहीं है. गुड. नाउ मैम, राइट डाउन. डाउट यस यस यस, मैम, सौम्या बताइए. आई वांट टू आस्क मैम, जो ITCZ जोन होता है मैम, जब वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होता है ड्यूरिंग समर्स, तो मैम उसको थर्मल इक्वेटर भी बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? थर्मल इक्वेटर हाँ, क्यों क्यों बोलते हैं? व्हाई डू वी से दैट? मैम, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो थोड़ा शिफ्ट हो रहा एग्जैक्ट. है. एक्चुअली जो देखिए, जो इक्वेटर पे कंडीशन 0 डिग्री पे आइडियली होनी चाहिए, वो 0 डिग्री पे अगर किसी ईयर हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर वो कंडीशन आपको 5 डिग्री पे मिल रही है तो आप आइडियली तो उसको इक्वेटर कंसीडर करोगे ना, एक तरीके से. मतलब वो इक्वेटर कंसीडर, देखिए ये आप लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन टू टेल यू दैट इक्वेटर पे ये कंडीशंस होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो कंडीशन इक्वेटर पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इक्वेटर पे ही हो सकता है वो थोड़ा सा ऊपर 5 डिग्री लैटिट्यूड पे हो. तो वो फिर आपका क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम योर रेफरेंस पॉइंट. जो आप इक्वेटर पे करने का सोच रहे थे, दैट यू विल डू एट 5 डिग्री नॉर्थ. इतना सा मतलब है. और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपवर्ड शिफ्ट होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में नीचे. सिंपल सी बात है. क्यों? बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ सन. आया समझ में? ठीक है. नाउ राइट डाउन डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूऑन. डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूऑन. डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूऑन. Dynamic concept of fear. Write down. The dynamic concept about the origin of monsoon. The dynamic concept about the origin of monsoon was put by Fleon in 1951. Was put by Fleon in 1951. Full stop. According to this concept, according to this concept, monsoon is a result of. According to this concept, monsoon is a result of migration of प्लैनेटरी विंड्स. देखो ये जो आपकी विंड्स है ना, ये वाली, इनको आप बोलते हो प्लैनेटरी विंड्स. ये जो आपका बीच में ट्रेड विंड्स हैं, एक आपकी वेस्टर्ली होंगी यहाँ पे, फिर आपके पोलर ईस्टर्लीज, इनको आप क्या बोलते हो? ट्रेड विंड्स और प्लैनेटरी विंड्स और परमानेंट विंड्स. डिफरेंट डिफरेंट नाम है इनके. ठीक है. ये परमानेंट होती हैं, प्लैनेटरी होती हैं. ठीक है. तो फ्लेयन ने क्या बोला? The first statement given by him was, according to his concept, monsoon is a result of seasonal migration of planetary winds and pressure belts. Seasonal migration of planetary winds and pressure belts. And pressure belts. Full stop. The intertropical convergence zone. The intertropical convergence zone
is formed due to convergence of northeast and, देखिए नॉर्थ ईस्ट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ से इमर्ज कर रही है, दैट इज द डायरेक्शन, सब समझते हैं कि ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ ईस्ट है। अगर मैं यहाँ से डायरेक्शन ओरिजिनेट होके यहाँ आ रही है, तो यहाँ से और जहाँ से ओरिजिनेट होती है विंड, वो वाला डायरेक्शन लिया जाता है, ऑलवेज रिमेम्बर। ठीक है, ये नहीं कि आप ही सोचेंगे मैम ये तो वेस्ट में जा रही है, तो इसका नाम तो वेस्ट होना चाहिए, साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है, नो। Always take the direction of the wind from where it is originating. So it is originating from northeast. I hope everybody understand the direction. ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, नॉर्मल, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। दिस पॉइंट इज योर नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, वेस्ट और साउथ के बीच में है तो साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट। ठीक है, ये बेसिक आपकी डायरेक्शंस है। अब ये कहाँ पे ओरिजिनेट कर रही है, नॉर्थ ईस्ट में, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। अब ये कहाँ ओरिजिनेट कर रही है, देखो यहाँ पे साउथ ईस्ट, तो ये हो गया साउथ ईस्ट। ठीक है, अब व्हेन आई मेक यू राइट, देखिए राइट डाउन द कन्वर्जेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, द कन्वर्जेंस ऑफ north east and south east trade winds near the equator near the equator near the equator full stop, the northern and southern boundary of ITCZ, the northern and southern boundary of ITCZ are called as ITCZs are called as, okay, so Prithvi is asking, ma'am, subtropical high pressure and equatorial low pressure are thermally induced. Yes, correct, Prithvi. If you're watching it now also, yes, you have right, you have said right that subtropical high pressure आपका थर्मल इंड्यूस नहीं है। मैंने ये टॉपिक कल कवर किया था, कल वाले लेक्चर में, यू कैन वॉच दैट। सब ट्रॉपिकल इज हाई प्रेशर एंड इज बिकॉज ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड। आपके दो डायनेमिकली इंड्यूस्ड है, वन इज योर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एंड सब पोलर लो प्रेशर, ये दोनों ही डायनेमिकली इंड्यूस्ड है। थर्मली इंड्यूस्ड है आपके इक्वेटोरियल लो प्रेशर एंड पोलर हाई प्रेशर, ये आपके थर्मल इंड्यूस्ड है। उसका रीजन आप देख सकते हैं, यू कैन रेफर टू माई yesterday's video, which is of 16th October, and you will get the clarity. The whole lecture was about this. Prithvi is saying good explanation. Thank you, Prithvi. And if you're still watching, you can ask the doubts. Okay, done. Now write down. इसको आप क्या बोलोगे, नॉर्दर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, नॉर्दर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस एंड सदर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस एंड सदर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। लियोन वही बात कर रहे हैं जो मैं अभी आपको बता के, I have just covered it now. Write down in the next line, there is a belt of doldrums. Write down in the next line, there is a, write down in next line, there is a, write down, there is a belt of doldrums within the intertropical convergence characterized by equatorial westerlies. ठीक है, now write down,
What else he said? Right on the next line. Further, he said that at the time of summer solstice, I hope you understand the summer solstice, which is जो आपका जून का टाइम होता है, when you have the longest day 21st June, right? Whole season, that season is known as summer solstice. At the time of summer solstice, 21st June ब्रैकेट में लिखेंगे, 21st June, comma, when the sun rays are vertical over, when the sun rays are vertical over Tropic of Cancer, when the sun rays are vertical over Tropic of Cancer, when sun rays are convergence, the sun rays are over Tropic of Cancer, comma, the NITC, the NITC, which is your northern इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, मतलब अगर आपका इट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर सन है जो आपका जून के समर के टाइम होता है, तो आपका कहाँ तक एक्सटेंड कर जाएगा? 30 डिग्री तक. क्या एक्सटेंड कर जाएगा आपका 30 डिग्री तक? बताइए क्या बोला है इसने? When the sun rays are vertical of Tropic of Cancer, the NITC is extended up to 30 degree, covering South and Southeast Asia. ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक कवर करेगा. क्या आपका दिस, क्योंकि ऊपर की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ हो जाएगा ना, तो ये सब ट्रॉपिकल. अब अगर ये विंटर्स होता जो अब चल रहा है, तो ये नीचे की साइड होता. आपका जो सब ट्रॉपिकल है कहाँ से स्टार्ट होता? 25 से फॉर एग्जाम्पल. लेकिन अब क्या चल रहा है? समर्स चल रहा है, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया. ऑब्वियसली लैटिट्यूड का नंबर भी बढ़ जाएगा, तो ये 30 डिग्री तक या 35 तक रहेगा. आ रहा है सबको समझ में? Now write down next. Comma, covering South and Southeast Asia. This covers South and Southeast Asia. Full stop. Full stop. Thus, equatorial westerlies are established over. Thus, equatorial westerlies are established over these areas. Write down. Your full stop. The equatorial westerlies become southwest or summer monsoon. Southwest or summer monsoon. एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यू विल गेट द क्लैरिटी बिकॉज ऑफ द डायग्राम. ड्रॉ करिए डायग्राम. इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन देखेंगे कहाँ से कैसे ऐसे मूव कर रहे हैं, और ये जरूरी नहीं है ऐसे ही हो स्ट्रेट. इट इज मोस्टली लाइक दिस. ठीक है, I'll draw with different pen, color pen. देखिए ऐसा नहीं स्ट्रेट बिल्कुल होगा, इट इज मोर लाइक दिस. ना, अब आपको ये देख लो 30 डिग्री तक आपका क्या है, यहाँ से आपका सब ट्रॉपिकल यहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर यहाँ से स्टार्ट होगा. ठीक है,
अभी मैंने आपको बताया था नीचे हाई प्रेशर कल, यहाँ पे क्या है कंडीशन लो प्रेशर का, क्यों? बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन है, तो जहाँ पे सन ज्यादा है तो वहां पे लो प्रेशर, जहाँ पे नहीं है वहां पे हाई प्रेशर। तो विंड्स कहाँ से आएंगी? यहाँ से, एंड दे विल ब्लो लाइक दिस एंड दे विल मूव टुवर्ड्स राइट। राइट की तरफ क्यों मूव करके? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ गया। आना चाहिए था ऐसे आइडियली, कैसे आना चाहिए था? आइडियली आना चाहिए था ऐसे, पर लेकिन आ कैसे रहा है? लाइक दिस, राइट की तरफ मूव कर गया। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जैसे ही ऐसे आया राइट, तो ये क्या है? साउथ वेस्ट। अब ये जब साउथ वेस्ट आया, ये कौन सा है? साउथ वेस्ट मानसून की बात हो रही है। तो साउथ, ये यही वही विंड्स है जो मानसून लेकर आती है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्यों? क्योंकि यहां से आ रही है साउथ वेस्ट, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? ये है साउथ वेस्ट, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट। यहाँ पे ओरिजिनेशन देखो विंड्स का, साउथ वेस्ट। जैसे बेसिकली इफ विल डू द मॉनसून इन डिटेल अभी, तो यू विल अंडरस्टैंड विंड्स पहले यहाँ पर आएंगी, मेडागास्कर तक जाएंगी, मेडागास्कर से फिर दे विल कम हियर। ये पूरा डायरेक्शन आपका साउथ वेस्ट होगा, ठीक है। दिस इज साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट अगर फॉर एग्जांपल अगर ये सेम होता, लाइक 30 डिग्री तक नहीं होता, नीचे के साइड तक होता, तो ऑब्वियसली यहीं तक ही विंड जाती, क्योंकि हाई प्रेशर स्टार्ट हो गया। ये सॉरी, ये लो प्रेशर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब लेकिन क्या है, यहाँ पे 30 डिग्री तक है कंडीशन लो प्रेशर की, यहाँ पे जो क्रिएट हो रही है। तो ये कहाँ से जाएगा? हाई प्रेशर से यहाँ तक जाएगा। तो मानसून कहाँ तक आएगा? या साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब आप डायरेक्शन देख लो, साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी कंट्रीज है? फिलीपींस है आपका, या इंडोनेशिया, ये सारे इंक्लूडेड हैं। योर ऑल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से आल्सो एक्सपीरियंस द हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। Excuse me, ma'am. करेक्ट, बताइए। Ma'am, could you please just explain it once again? हाँ हाँ श्योर। देखो, shall I explain you this map only or you want me to draw map again? क्योंकि फिर ये थोड़ा सा, it has already been covered, lot of detailing I have done in this map. Sure, ma'am. एक काम करते हैं, पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, once you draw then I'll explain you, ठीक है। क्योंकि जो भी चेंजेस होंगे then I can do in that. ये this is for a reference, जितना आपको ड्रॉ करना है आप ड्रॉ करिए, I'm just coming in and draw it.
Have you drawn it? Okay. Now we'll consider what we were discussing. Okay. Has it been drawn like everybody has drawn it? Tanishka? Okay, good. See, I'll explain this again. देखिए. This is your Africa. This is your Australia. This is your Madagascar. Okay. And consider this as your 30 degree. This is your 30 degree latitude north. ठीक है. This is your 30 degree latitude north. अब कहाँ से आ रहा है? See, यहाँ से इसे wind चली, इसको भूल जाइए. ऑस्ट्रेलिया की क्यों चली, क्या हुआ? Forget about this. This is a part of the climatology. जो आप पढ़ते हो
फिजिकल ज्योग्राफी में, बिकॉज फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे, वहां पे यू विल कंसीडर दिस कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है। ये आपका क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है पूरा। आई विल एक्सप्लेन यू। ये फिजिकल ज्योग्राफी में जो हम वर्ल्ड का क्लाइमेट पढ़ते हैं उसमें आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, अभी बस आप ये सोचिए कि यहाँ से विंड इज ब्लोइंग। अब विंड यहाँ से ब्लो कर रहा है और इट इज कमिंग टू मैडागास्कर। अब मैडागास्कर से, बिकॉज सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा है, हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर क्यों है? रीजन सिंपल, बिकॉज ऑफ द इंसुलेशन, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन है नहीं। जून के टाइम पे यू नो दैट इट इज अ स्कॉचिंग हीट in the northern hemisphere, so only here you will have the low pressure condition in northern hemisphere. Okay, I'm talking about India and the different parts of the northern hemisphere where you will experience a low pressure. ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों है, यहाँ पे लो प्रेशर क्यों है? अब यहाँ से इट इज सेइंग दैट साउथ वेस्ट, इट इज सेइंग कि साउथ वेस्ट एरिया से क्या आ रहा है, साउथ वेस्ट एरिया से विंड्स आ रही हैं। इतनी बात मैंने समझी कि साउथ वेस्ट एरिया से विंड्स आ रही हैं ये वाली। क्यों मैंने साउथ वेस्ट विंड्स लिखा? रीजन इसलिए क्योंकि आप डायरेक्शन देखिए कहाँ से। आई ऑलवेज सेड दैट यू विल ऑलवेज कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स फ्रॉम वेयर इट इज ओरिजिनेटिंग। कहाँ जा तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ रही है, और ओरिजिनेट कहाँ से हो रही, डायरेक्शन हमेशा देखेंगे फ्रॉम वेयर इट इज ओरिजिनेटिंग। जहां से ओरिजिनेट हो रहा है वही आपका डायरेक्शन ऑफ विंड माना जाएगा। डायरेक्शन ऑफ विंड इज ऑलवेज फ्रॉम वेयर इट इज ओरिजिनेटिंग। आप ब्रैकेट में लिख लीजिए ताकि आप बाद में नहीं बोलें, from where it is originating. It's very important to write all these details, because the moment you will get doubtful about any fact, then you can refer to these small facts which can actually help you. Write down these facts that it is always from where it is originating. So southwest monsoons, southwest इसलिए word है। Now southwest winds are going towards this. कहाँ से? बिकॉज आई ऑलवेज टोल्ड यू हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक विंड जाएगी, तो हाई प्रेशर आपका सदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर की तरफ। अब लो प्रेशर कहाँ तक डेवलप है? लो प्रेशर यहाँ तक डेवलप है। होता फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रियल लैटिट्यूड वगैरह की वजह से चलती है, जैसे भी चलते, तो वो लो प्रेशर यहाँ तक भी क्रिएट हो सकता था 30 डिग्री से थोड़ा सा नीचे, फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री नॉर्थ। लेकिन because sometimes what happened, there is a movement of the whole ITCZ will shift towards northward, so there will be a movement of everything. अब लो प्रेशर ऊपर तक क्रिएट होगा, 30 डिग्री तक क्रिएट होगा। अब यह सब ट्रॉपिकल यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ तक क्या चलेगा, यहाँ तक साउथ वेस्ट विंड्स जाएंगी, और they all will experience monsoons. ठीक है, आया बात समझ में? कितने लोगों को बात समझ में आई है? गुड। अब यही चीज हम क्या दूसरे डायरेक्शन में बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कैन बी क्रिएटेड फॉर द विंटर्स ऑल्सो। विंटर्स में क्या होगा? सेम चीज, लेकिन अब क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, साउथ वेस्ट की तरफ आ जाएगा। नाउ हाउ इट विल बी लाइक दिस, 0 डिग्री। ठीक है, because the sun has moved now in the southern hemisphere, it will experience the low pressure, and here you will have the high pressure. ठीक है, here you will have the high pressure. तो ये नीचे की तरफ मूव करे, सब कुछ नीचे की तरफ मूव कर गया, मतलब सब ट्रॉपिकल भी नीचे की तरफ आ जाएगा। 25 डिग्री नॉर्थ से सब ट्रॉपिकल स्टार्ट होगा, 30 डिग्री से नहीं स्टार्ट होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये विंड्स कौन सी, नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट विंड्स क्यों आ रही है हम करेंगे अभी डिटेल में। नॉर्थ ईस्ट विंड्स आपकी जनरेट होती है इस टाइम पे। विंटर्स जो अभी चल रही है विंड्स वो नॉर्थ ईस्ट है, जो आपको ठंड लग रही है ये नॉर्थ ईस्ट की वजह से हो रहा है। ठीक है, रिट्रीटिंग मॉनसून जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद विंटर्स आ जाती हैं, एंड दिस इज इस तरह से ब्लो कर रहा है, ऐसे ब्लो करेगा। ऑब्वियसली इट विल चेंज द डायरेक्शन जैसे यहाँ से आएगा। अब यहाँ से डायरेक्शन यहाँ आएगा, किसकी तरफ मूव करना चाहिए, वेस्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि दिस इज द विंड डायरेक्शन। अब यहाँ पे राइट की तरफ मूव नहीं करता, वेस्ट की तरफ। अब ये इसमें मत पड़िए कि वेस्ट और राइट, ये हमारा मैटर नहीं है। अभी बस ये देखिए कि ये नॉर्थ ईस्ट और ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक है,
सेम सिमिलरली सारे हम मैप्स बना लेंगे यहाँ पे क्विकली। ठीक है, ठीक है, आगे समझ में सबको? हाउ मेनी ऑफ यू? इसका क्लियरली मैप बना सकते हैं, आप बना लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये वाली जो विंड्स है नॉर्थ ईस्ट। और क्यों नीचे की तरफ जा रही है? बिकॉज यहाँ हाई प्रेशर है, नीचे लो प्रेशर, नॉर्थ ईस्ट मानसून। Keep on writing now. In brief, write down. In brief, according to the Fion. In brief, have you written before? इससे पहले आपने क्या क्या लिखा है? Can you just brief me out? Because I don't want to miss any point. बताइए, इससे पहले क्या लिखा है आपने? हाँ, क्या लिखा है आपने? लास्ट क्या लिखा है? What is the last word that you have written? Western equatorial. Okay, okay. Now write down. Full stop. On a rotating Earth, on the rotating Earth, comma, the trade winds of southern hemisphere, on the rotating Earth, comma, the trade winds of southern hemisphere, after crossing equator, after crossing equator, after crossing equator, turn towards right, turn towards right, due to Coriolis force. Full stop. Short form में लिखेंगे NITC, the Northern Intertropical Convergence. तो short form में NITC is associated with numerous atmospheric storms, which yield heavy rainfall, during wet monsoon months, ब्रैकेट में लिखेंगे जुलाई टू सितंबर, जुलाई टू सितंबर, full stop. Similarly, northeast or winter monsoon does not originate
only due to low pressure in southern hemisphere during winter solstice. Full stop. Full stop. Next, Vicky. In brief, according to Fleon, the existence of monsoon in Asia, in brief, according to Fleon, the existence of monsoon in Asia, especially in the subcontinent of India, is not due to temperature contrast. It is not due to temperature contrast between land and sea. It is not due to temperature contrast between land and sea, but mainly due to annual migration of thermally produced planetary winds and pressure belts. Thermally produced planetary winds and pressure belts. Full stop. Despite the relative shifting, the upper atmospheric, despite the relative shifting of, please cut upper atmospheric, despite the relative shifting of intertropical convergence and pressure belts, comma, Fleon seemed to have ignored upper atmospheric circulation. He seemed to have ignored upper atmospheric circulation and southern oscillations, which make the Asiatic monsoon, a fairly complex system. Full stop. He also could not explain the causes of early arrival of Indian monsoons in the state of Northeast. Full stop. The dynamic concept, therefore, was not taken as sole explanation of the origin of monsoons. Next लिखेंगे recent concepts about origin of
recent concepts about origin of Indian monsoons, recent concept about origin about Indian monsoons. Sorry, concepts about the origin of Indian monsoon. Write down. During the last 5 decades, during the last 5 decades, comma, the upper atmospheric circulation, the upper atmospheric circulation has been studied. The upper atmospheric circulation has been studied significantly, significantly, comma, as a result of which, as a result of which, meteorologists, meteorologists have raised certain doubts. They have raised certain doubts about validity of the classic concept of origin of Indian monsoons. Origin of Indian monsoons. Full stop. It is now believed that differential heating. It is now believed that the class is going on. It is now believed that differential heating of land and sea cannot produce. The differential heating of land and sea cannot produce the monsoon circulation. Full stop. More recent theories have led greater emphasis on they have led greater emphasis on circulation in atmosphere over the subcontinent and adjoining area. Full stop. Apart from the upper atmospheric circulation, full stop लगा के लिखेंगे. Apart from the upper atmospheric circulation, comma, the recent concepts rely heavily on Tibetan plateau, comma, jet stream and El Nino और एल नीनो के ब्रैकेट में लिखेंगे southern oscillations. Right further, the data gathered by, I'll explain you this concept, don't worry. The data gathered by meteorologists after the Second World War have revealed that origin and mechanism of monsoons are related to
are related to following phenomena. They are related to following phenomena. First point, the role of Himalayas and Tibetan Plateau as a physical barrier and a source of high level heat. High level heat. Second point, circulation of upper air jet streams in the troposphere. The existence of, write down next point, the existence of upper air circumpolar world, the existence of upper air circumpolar world over north and south poles in troposphere. Last point लिखेंगे, the occurrence of El Nino in the South Pacific and Indian Ocean. Now tell me one thing. I know that you must be having a lot of doubts in it. I'll explain you one by one. To open from there. Okay. हाँ जी, बताइए पहला पॉइंट क्या है? What is the first point that they are saying? देखिए, फियोन ने सारी बातें करी पर एक बात भूल के कर ले. क्या? What he forgot? Fion was talking about the difference in the high pressure and low pressure which has been developed in southern hemisphere and northern hemisphere. Yes, this is one of the reasons, we cannot deny that, and he was right at it. But he forgot there is much more than this, which we call it as the upper circulation, air circulation, which is also one of the factor for bringing the monsoons in various part of the country, various parts of the globe, which you call it as jet streams. We will understand the concept of jet streams, which is a upper air circulation, and he did not mention about this. Second point is this, that he forgot to tell that why the northeast are getting the rainfall earlier than the certain parts of the country. For example, if I consider India only, ठीक है, आप ये देखेंगे जब आपका नॉर्थ ईस्ट में दिस रेनफॉल कम्स, ठीक है, दिस यहाँ पे वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो यहाँ पे आपका नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है, एक डायरेक्शन, एक ब्रांच आपका इस तरह से जाएगा, दो ब्रांच में डिवाइड होता है ना आपका साउथ वेस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट इज कमिंग, एक ब्रांच आपका इधर जाएगा तो यहाँ पे रेनफॉल करेगा, एक ब्रांच आपका इधर जाएगा, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर पिक करेगा और यहाँ पे रेन करेगा. आइडियली नॉर्थ ईस्ट से पहले कहाँ बारिश होनी चाहिए? इस एरिया में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो ऊपर है, तो यहाँ पहले बारिश कैसे हो सकती है? आइडियली तो यहाँ पे ज्यादा जल्दी बारिश होनी चाहिए क्योंकि लैटिट्यूड पहले है, नीचे है लैटिट्यूड, पर यहाँ पे नहीं होती है, सबसे पहले यहाँ पर होती है. They could not explain the phenomena. क्यों नहीं होती है? Because जब भी डिवाइड होता है दिस साउथ वेस्ट आपका, when the branches get divided like this and this, तो यहाँ से मॉइस्चर पिक करके यहाँ पे रेनफॉल करता है, और यहाँ पे बारिश करने के लिए क्योंकि बैरियर्स भी चाहिए आपको, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स पे बैरियर्स हैं, बैरियर्स जैसे आपका रेनफॉल होता है, हमेशा बैरियर्स की जरूरत नहीं है, और दिस इज नोन एज ओरोग्राफी,
हमेशा बैरियर्स के बिना भी आपका रेनफॉल हो सकता है मानसून, ऐसा नहीं है। बट द पॉइंट इज इंटरनली कैसे आ रहा है, इंटरनली जो आपका ये जो डायरेक्शन है किसका, ये डायरेक्शन ऑफ दिस साउथ वेस्ट मानसून विंड्स अंदर की साइड कैसे मूव करता है, लाइक दिस, इसको अंदर लेने आने वाला कौन है, inside of the interior of the your country is your upper circulatory motion, upper circulation of the air, which you call it as jet streams. We call it as easterly jet streams which blows from east. Easterly क्यों, क्योंकि east से blow करता है, इसको tropical jet streams भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था, he could not explain that. दूसरी चीज, what else he could not explain, अब हाँ, he did not mention about the ENSO. What is this? This is your Southern Oscillation. Southern Oscillation का concept climatology में करेंगे। Southern Oscillation का concept होता क्या है? Basically, I just tell you in brief. यहाँ पे see your Indian monsoon, मैंने फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन देने के टाइम ही आपको बताया था, ये एक कोई exclusive concept, it's an integrated concept. Why? Because Indian monsoon is highly dependent on what is happening around the globe. अगर आपके चेंजेस होंगे, फॉर एग्जाम्पल हियर इज योर साउथ अमेरिका और हियर इज योर ऑस्ट्रेलिया, ये आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है। जो साउथ अमेरिका में कंडीशंस होंगी विच विल अफेक्ट, ये है आपका एंसो, यहाँ पे होता है एंसो, योर southern your south of southern oscillations are happening here. तो यहाँ पे पेरू और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो भी चेंजेस होते हैं इधर थ्रू रिवर्सल और जो भी यहाँ पे होता है, जो चेंजेस यहाँ पे होंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे सीधा इंडियन मानसून पे। और उसके अलावा भी चीजें डिड नॉट एक्सपेक्ट, ही डिड नॉट टेल अबाउट द बैरियर दिस माउंटेन इज क्रिएटिंग, हिमालयस आर क्रिएटिंग। कैसा बैरियर, जब हिट करता है यहाँ पे विंड्स आपका, तो यहाँ पे बारिश होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कैसा बैरियर, ऊपर से जब साइबेरिया से देयर आर विंड्स व्हिच आर कमिंग, दिस एक्ट एज अ बैरियर, वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग द कोल्ड, एक सीवियर कोल्ड, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वाला कोल्ड, लाइक जो माइनस में चला जाता है, वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग बिकॉज ऑफ द बैरियर प्रेजेंट। अब ये लो प्रेशर कंडीशन इसलिए भी बनती है यहाँ पे बिकॉज तिब्बतन प्लेटो बहुत ज्यादा हीटेड अप हो जाता है। ही डिड नॉट मेंशन अबाउट दैट, द रोल ऑफ तिब्बतन प्लेटो, so there were a lot of flaws in his explanation. Are you able to get it? What were the flaws in his explanation? देखिए हाँ, so no, actually yes, Halley ने क्या बोला था, Halley told that this is happening because of differential heating. ओनली डिफरेंशियल हीटिंग है, लैंड और सी के बीच में जो आपका डिफरेंशियल हीटिंग होता है उसकी वजह से आपका मानसून हो जाता है। अगर ऐसी बात होती तो फिर तो यहीं पे बारिश होनी चाहिए थी, इंटीरियर में तो बारिश होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि कोस्ट पे बारिश होती। फिर अगर ऐसी बात है तो अंदर तक उसको ले जाने, यहाँ तक उसको लेके आने वाला कौन है? नॉर्थ ईस्ट में कौन सा आपका कोस्ट है? नॉर्थ ईस्ट में भी कोई कोस्ट नहीं है। मौसिनराम चेरापूंजी ऑफ दिस मेघालय आर हैविंग द हाईएस्ट रेनफॉल, उनका 250-300 सेंटीमीटर तक जाता है, 700, इतना ज्यादा उनका रेनफॉल का कैपेसिटी है। तो जब इतना ज्यादा दे आर एक्सपीरियंसिंग द रेनफॉल, तो वहां तो कोई कोस्ट, यहाँ पे कौन सा कोस्ट है? आप बताइए, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा कोस्ट आपको दिख रहा है? यहाँ पे तो बाउंड्री पे आपके यहाँ पे म्यांमार है, माउंटेन्स है, तो कुछ तो रीजन होगा ना कि this is not just the differential heating, there is much more than that. So he talked about planetary winds. ये planetary winds of pressure belts की वजह से है। Differential heating, yes, it does play the role. Not talking like that कि नहीं, बिल्कुल रोल नहीं प्ले करता, it does play the role. But apart from that, this is also important that they are majorly because of the planetary winds and pressure belts. ठीक है? Okay, how much time? We have 25 minutes left. लिखिए, Indian monsoon and Tibetan plateau. Indian monsoon
and Tibetan Plateau. Indian monsoon and Tibetan Plateau. Write down. In 1973, in 1973, comma, the monsoon expedition MONEX, short form में लिखेंगे MONEX. Just hold on. Write down. Write down. In 1973, monsoon expedition MONEX was organized as a joint venture of as a joint venture of Soviet Union as a joint venture of Soviet Union and India. Soviet Union and India. ठीक है? Full stop. Under this expedition, comma, four Russian and two Indian ships comma, equipped with modern scientific instruments, equipped with modern scientific instruments, were pressed into the service, in Indian Ocean and Arabian Sea, in Indian Ocean and Arabian Sea, to investigate the phenomena of Indian monsoon, Full stop. The period of investigation extended from month of May to July, month of May to July, month of May to July 1973, on the basis of data obtained, comma, Soviet meteorologist arrived at the conclusion that Tibet Plateau, that Tibet Plateau, that Tibet Plateau
that Tibet Plateau plays a crucial role in initiating the monsoon circulation over the Indian subcontinent. According to Dr. Koteshwaram, according to Dr. P. Koteshwaram, according to Dr. P. Koteshwaram, the monsoon of the world, had expressed the views. Monsoon of the world is your, write down in double inverted commas. It's a kind of a publication which has happened, right? The monsoon of the world had expressed views that summertime heating of the plateau of Tibet, the summertime heating of the plateau of Tibet, the summertime heating of the plateau of Tibet was the most important factor in the causation and maintenance of causation and maintenance of monsoonal circulation. Monsoonal circulation. Full stop. Write down. The plateau of Tibet is around 600 kilometer wide. The plateau of Tibet is around 600 kilometer wide. In the west and 1,000 kilometer wide in the east. Width कैसे आप देखेंगे? This is your length. Width आपके ऐसे है 600 kilometer in the west and 1,000 kilometer. मतलब इस तरह से it is like that. 1,000 kilometer in the east and then your length. Length I'll be telling you, right? And the length is about 2,000 kilometer. This is your length. 2,000 kilometer. 2,000 kilometer. Full stop. Now it is a plateau definitely, so it will be at a height also above the sea level. So the plateau's height is about 4,000 meter. The height is about 4,000 meter. Full stop. Thus, it is an enormous block of high ground acting as a formidable barrier. अब देखिए बिकॉज इसका हाइट इतना ऊपर है, कोई भी चीज का हाइट, जैसे लद्दाख में आप जाते हो उसका एक तो लेयर थिन है लद्दाख का, ऊपर से हाइट ज्यादा है तो आपका इंसुलेशन बहुत ज्यादा होता है. सिमिलरली तिब्बत प्लेटो में भी ऐसा है, एक तो हाइट ऊपर है, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ वर्सेस आई एम स्टैंडिंग हियर, ऑब्वियसली इंसुलेशन मुझे जो यहाँ मिलेगा वर्सेस आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ विल बी डिफरेंट. सिमिलरली हैपेंस विद तिब्बतन प्लेटो. तिब्बतन प्लेटो का जो हाइट है वो ऐसा है कि 2-3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ही वहाँ पे हीटेड अप होता है. सो राइट डाउन, ड्यू टू इट्स enormous height,
it receives, due to its enormous height, it receives 2 to 3 degree more insolation. It receives 2 to 3 degree more insolation than the neighboring areas. Full stop. It is also one of the most important. It is also one of the most important geographical controls. It is also one of the most important geographical controls on the general atmospheric circulation, on the general atmospheric circulation in the region. ठीक है, दो तरह का इट इज प्रोवाइडिंग अ थिंग. फॉर एग्जांपल, एक जगह फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करते हैं, एक जगह इट इज अ सोर्स ऑफ हीट. ठीक है, राइट डाउन. According to Mong Tun Yin, spelling is, this is a scholar, you can use the name of these scholars, very very important. According to Mong Yun Yin, according to Mon Tun Yin, according to Mong Tun Yin, comma, the Tibetan Plateau act as a physical barrier. The Tibetan Plateau act as a physical barrier. Full stop. In the beginning of the June, the subtropical jet streams disappear completely. In the beginning of the June, the subtropical jet streams, ये कौन सी subtropical jet streams की बात हो रही है? जो मेडिटेरेनियन सी से आती है, ये वो subtropical jet streams की बात हो रही है जो मेडिटेरियन सी से, जो मेडिटेरियन सी से एट योर 35 डिग्री टू 40 डिग्री. तो ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स मेडिटेरियन सी से जो आती हैं, यहाँ से आती हैं, ब्लो करती हैं इस साइड. यहाँ पे क्यों ब्लो कर रही हैं? क्योंकि कौन लेकर आ रहा है इनको? जैसे आपका ट्रॉपिकली जेट स्ट्रीम्स है या ईस्टर्ली, ये अपर सर्कुलेशन मोशन की बात हो रही है, लोअर लेवल पे नहीं ऑपरेट करते हैं, ये हायर लेवल पे ऑपरेट कर, हायर एल्टीट्यूड पे ऑपरेट करते हैं. ठीक है, ये अपर सर्कुलेटरी है. तो ये जो अपर सर्कुलेटरी है 4 टाइप्स की होती है. अभी आपको मॉनसून समझने के लिए सिर्फ 2 टाइप का समझना है. वन इज योर सब ट्रॉपिकल, वेस्टर्ली विंड्स. ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल विंड्स. दूसरा होता है आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स. ईस्टर्ली क्यों? क्योंकि ईस्ट से आती हैं. और ये वेस्टर्ली क्यों? क्योंकि वेस्ट से ओरिजिनेट होती हैं. इनका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम दैट दे आर टेकन? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम. सिंपल लिखेंगे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स. सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स कहाँ से आ रही हैं? वेस्ट से आ रही हैं जेट स्ट्रीम्स. आ रही है बात में आपको समझ में? तो ये वाली जो आपका है जून के टाइम में, अभी क्या है, ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स यहाँ पे अक्टूबर में आ चुकी हैं, तभी आपको क्या लग रहा है? यू आर फीलिंग कोल्ड. ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स आ चुकी हैं यहाँ पे. हम मानसून जब पढ़ेंगे इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे एज वी प्रोसीड, पर अभी आप ये समझ लीजिए. तो जून के टाइम तक जब आता है तो ये बिल्कुल वैनिश हो जाती है. जब ये हटेंगी तभी तो गर्मी आएंगी, वरना तो ठंडी रहेगी. तो ये कब तक हट जाती है? कंप्लीटली धीरे धीरे हटती है, जून तक बिल्कुल वैनिश हो जाती है. यही वो बता रहा है. ठीक है, disappear completely, full stop. At this time, the jet stream shift to the north of the Himalayas. नॉर्थ ऑफ हिमालयास क्यों? क्योंकि अभी ठंड नहीं करना, अभी नॉर्थ की तरफ मूव कर जाएंगे, ऊपर, नॉट हियर, नॉर्थ की तरफ मूव कर जाएंगे. ठीक है, राइट डाउन. एट दिस टाइम द जेट स्ट्रीम शिफ्ट टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयास एंड तिब्बत and takes up the position at about and
takes up the position at about 40 degree north. 40 degree north. ठीक है. इनफैक्ट प्लेटू ऑफ द तिब्बत, ऐसा ही नहीं है सिर्फ हीटेड अप होता है, अक्टूबर में वो बहुत ज्यादा कोल्ड, अभी अक्टूबर का टाइम चल रहा है, अक्टूबर में तिब्बत बहुत कोल्ड होगा. ठीक है. इनफैक्ट प्लेटू ऑफ द तिब्बत बिकम्स वेरी कोल्ड इन विंटर. इनफैक्ट the plateau of the Tibet becomes very cold in winter, comma, proves to be the most important factor in causing the advance of the jet far to the south in middle of the October. It becomes an important factor in causing the advance of the jet to the south in the middle of the October. Right down. Full stop. In the middle of the October, it proves to be the most important. In middle of the October, it proves to be the most important factor in causing the advance of the jet south, in causing advance of the jet south of the Himalayas or bifurcated into the two parts. Into the two parts. क्या मतलब है इसका? देखिए, डायग्राम ड्रॉ करेंगे. अब यहाँ से कौन सी आ रही है आपकी? अभी जो आ रही है, which is a subtropical jet stream. Subtropical jet stream. And how they will be divided? They will be divided like this. ये तिब्बत है, एक ऊपर की तरफ चला जाएगा, एक नीचे की तरफ. There will be two direction of it. एक आपका स्ट्रीम ऊपर की तरफ जाएगा, एक नीचे की तरफ. That is what we have written also. ये जो नीचे की तरफ आएगा वो क्या करेगा? It will bend और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा. अभी आप बस इतना ही समझिए. ठीक है. कैसे ये बैरियर बन रहा है? ये आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है. It is originating from here, coming here, bifurcating in two parts, one in down, one in up. ठीक है. Getting the point?
Okay. Any doubt? The next topic we will do jet streams and Indian monsoon. Then we will do El Nino, southern oscillations, and it will be done. Is it clear to everyone? So now what you have to do, you have to revise it clearly. आपको इसको revise करना है, revise करे बिना नहीं आना है. I'm not giving any assignment because your Diwali, you're going for a break. Although we will resume our classes after your Diwali, like for example your Monday, Saturday, Sunday and Monday you're not having the classes. From Tuesday we will have the class. So if people are not coming to the class or they are going back to their hometown, so what they can do, they can see the recorded lectures. Will you come on Tuesday? आप आओगे? ठीक है, जो आ रहा है वो that is good, जो नहीं आ पा रहा है so yes Dhruv, tomorrow I'll check. And my schedule is really busy, Dhruv. So in the weekdays I do not get time. Saturday I will just check and let you know. Okay, I'll send it to your mail only. Nishan, yours also. Okay, and people who can see the recorded lecture who have time, if they are not going back or maybe they are not busy, then they can watch the recorded या फिर they can come to the live class on Tuesday. ठीक है, जितना भी आपको assignment जो pending है आप वो cover कर लेना. I'm not giving any new assignment to everyone. So and please revise and very happy Diwali and prosperous Diwali to all of you. Okay. Happy Diwali to Happy Diwali to you, Tanishka. अच्छे से मनाना सब. Nishan, happy Diwali. Soumya, happy Diwali. Celebrate it in a very nice way. ठीक है, सेफली अगर क्रैकर्स चला रहे हो तो बहुत सेफ रहना. ठीक है, एंड डू नॉट, आई वुड सजेस्ट कि कम ही जलाओ या ना जलाओ तो ज्यादा बेटर है. और अगर चलाना भी है तो इफ यू वांट टू रियली डू दैट देन दे डू इट इन अ वेरी केयरफुल मैनर. ठीक है, बाकी आई वुड से कि जस्ट मेक अप डू योर पीसफुल वाला दिवाली. ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच. और टेस्ट कैसे देंगे आप लोग? कल पोर्टल पे अपलोड आई थिंक हो चुका होगा अब तक. तो जिन लोगों को ये मिल गया है आपका योर शीट्स, देन इट्स गुड. शीट्स नहीं मिला है तो यू कैन यूज योर ओन शीट्स. ठीक है, थैंक यू सो मच.